Ladies and gentlemen, good day and welcome to the Ritco Logistics Limited Q1 FY26 earnings conference call hosted by Monarch Networth Capital Limited. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during this conference call, please signal an operator by pressing star then 0 on your touchtone phone. Please note that this conference is being recorded. Please note, this conference call may contain forward-looking statements about the company which are based on the beliefs, opinions and expectations of the company as on date of this call. These statements are not the guarantees of future performance and involve risks and uncertainties that are difficult to predict. I now hand the conference over to Mr. Sahil Sanghvi from Monarch Networth Capital Limited. Thank you, and over to you, sir. Good afternoon, everyone, and thank you, Palak. On behalf of Monarch Networth Capital, we welcome you to the 1Q FY26 earnings call of Ritco Logistics Limited. We are delighted to host the management of Ritco today, and from their side, we have Mr. Sanjeev Elwadi, the Managing Director at Ritco. We have Mr. M.S. Tata, the Chairman at Ritco Logistics. We have Mr. Sarthak Elwadi, Co-founder at Trucksa, and we have Mr. Virendra Yadvanshi, CEO Trucksa. So without taking much time, I'll hand over the call to Mr. Sanjeev Elwadi for the opening introductory remarks. Over to you, Sanjeev sir. गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, नमस्कार. मेरा नाम संजीव एलवादी है और मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बात कर लूंगा so that all are comfortable. So along with me is my childhood friend who is the chairman of the company. We are together for last now 3 decades, and now next generation, my son and his son has also joined after having experience in UK and Australia, studying in the best universities. They have also joined the business in last 2 years. So along with me, Sarthak, who is my son, he is the co-founder of Trucksa, which is the aggregator platform. They will explain about that platform later on. And our very respectable CEO, Mr. Virendra Yadvanshi, has a experience of more than 25 years in tech and aggregator platform. So he is the CEO for Trucksa, and myself is the managing director for Ritco. So in next 10 minutes, I will explain about Ritco and the journey, how we have reached to this level. So we started the business in 1996, childhood friend, me and Manmohanji, and it was a typical small transport company from a very small one office, and from there we have reached to this level. So initially we were doing for some liquid transportation, then small transportation, and gradually we have increased our portfolio. So by 2000, we have understood that how the world is changing and India is opening up. So we started hiring the people. Earlier, it was typically done by us, by our own people. Then we hired a professional from the industry. By 2015, it was never looking back, and we became the number one logistic company from transport company. I'll tell you the difference. And we became number one in petrochemicals. So today, wherever the petrochemical is produced in India, be it Reliance, ONGC, GAIL, MRPL, Indian Oil, HPCL, Hindustan Mittal, or Haldia Petrochemical, Mitsubishi, wherever the petrochem is produced, we are number one choice, and by volume also, and in terms of the turnover also. So our share from that petrochem industry is almost 42 to 44%. And in terms of sharing ratio of petrochemical, it is reducing, but in terms of value, it is increasing because now we are more focusing on infrastructure and alternative energy business. So I told you that transport business to logistic industry, how it changed from 2015-16 when the GST was to come. So we met many high-profile people. We went for course in IIM Ahmedabad, and then the dean of IIM Ahmedabad was also on our advisor also. Then we went for the IPO in 2019. A lot of people from the industry, once we became more visibility has increased, they joined us. And today I can say with the proud that all the top-notch people experience not only from the logistic industry but also from Ola, Uber, Paytm, ATL. They are working with our company at very senior position.
So Ritco has evolved over these years from a transport company to the logistic company, and now our target is next year we'll change the complete dynamics of our company. Now we will be from logistic company, it will be complete supply chain company. So I'll tell you transport, logistic and supply chain. So typically we were the transporters, and we own very less number of trucks, though, and we have more than 30,000 trucks on Ritco portfolio. Although in trucks we have more than 368,000 trucks. That is the different thing which I will tell you later on. But we have more than 30,000 vendors all over India who believe and trust in Ritco. These are single operator who works for us. So we take big contracts on total concept basis, like we will move their full material. It is a 10 ton, 20 ton, 30 ton. So we give them the complete solution. Over the year, then we have started providing the, warehousing facility. And we have 10 warehouses. Nothing is owned by us. It is only on lease basis. So we have a warehouse for Reliance, we have for MRPL, then we have for Indian Oil, and we have for Garden Vareli, we have for Mitsui. We have these type of warehouses we have all over India. And now we have also started the business of in-plant logistics, which is a huge success. The time has come now, similarly like MNC, now Indian big companies also outsourcing their in-house logistics. It means that all manpower we have to provide skilled, unskilled labor to them, and then forklifts. So we do back-to-back business with our vendors, and this drives us a huge margin, and it's a long-term contract. Moreover, all the contracts are from 1 to 3 years. So this is all to B2B business, and we are investing heavily on technology because that we believe in technology. Both children have come from abroad, so they have their own experience, and now we have an aggregator platform which is run only on technology. So that inspires us to work more on technology. So over the years, we are doing business with lot of this value chain, and then focusing more on infrastructure. So steel, cement, and this solar system. So we are working for many companies like Wari, Adani Solar, Tata Solar, Vikram Solar. I'm forgetting the few names. So wherever the solar is produced, we are there. So this is all about Ritco Logistics. It is B2B business, and our growth in Ritco over this year is always, if you see from 2021, it is almost 25 to 30%. 25 to 28%. Last year also we did 27%. And if you see, although Mr. Manmohan, who is the chairman, he will tell you more about the data when you will ask him about financial. But just for the overview, that from June to June this year, we have a growth of 40%, which is remarkable. And from the first quarter to this quarter, we have a growth of almost 3%. First quarter is always lesser than the March, because March, the last quarter of the year, is always, we have a huge dispatches all over India. But in spite we have a huge dispatches, still we are able to beat the March result in this quarter, which is itself a very remarkable thing. Now let me talk about TruckSup. So TruckSup is an aggregator platform. In next 2-3 minutes, I will explain everything about TruckSup. The most of the trucks which you see on the road, 85% of these trucks are owned or managed by the single operator. When I say single operator, these are the vehicle owners who have 1 to 10 trucks. They are heavily depending on the broker, middleman, and other factors for getting the load. Their asset utilization is very less, almost about, you can say, 65%. So maximum 15 to 16 days they can run their vehicle, and most of the time vehicles are holding because of the load availability. And sometimes their empty running is more for getting the load. So this is their biggest problem. So road transportation almost contribute the rough data, though it is not very particular data available, different platform giving different data, but 70 to 72% are through road transportation. And 85% of that is owned by these industries, which are under the asset utilization. So in TruckSup, we do two things. First, we create a demand for them, and we have more than 30,000 business associates who puts their load on our platform, and we have more than 3 lakh trucks who avail the services. And it's more like a Ola and Uber, or Uberization of the trucking. So wherever they get unloaded, they get the load from there. So this is the idea which pilot run is already done, and our subscription has also started on pilot basis on state to state, and we got phenomenal result from the market. So we do one thing is this, to increase their asset utilization
and that, not force them, then willingly they are taking our subscription to access our app, where we have more than 3 lakh download and more than 3,68,000 trucks from all over India. And second thing is that these guys are commercially very weak. They are single operators. They do not know how to buy the best insurance and how to get the claim services, the FASTag, the fuel discount. They do not know insurance policies. They have a lot of problem in case of claim. And moreover, they are when they want to buy the vehicle, they do not know how to get into the ecosystem. So TruckSup is the first company in India. I repeat it with proud again. It is the first company in India who has created the complete ecosystem where single operator can come and buy the truck. When I say buy the truck, we have within the TruckSup, we have one services which is called Trucks Hub, HUB, where all the big fleet owners all over India, we call them LFO, large fleet owner, they put their vehicle to sell, because after getting GST benefit and depreciation, they sell the vehicle after 5 years. So single operator or the drivers who want to become an owner, they want to buy these vehicles. So it is not like a car business that you will get the car within the city. So person is in Punjab, he may get the truck from Kerala. So TruckSup is a virtual platform where everybody puts their photographs, and it is all linked with the M-Parivan high-tech system. So driver or truck owner can see the truck and can talk to the seller directly. So we are creating an opportunity for him to buy the truck, and immediately we have a finance facility back to back. So we have a agreement with Shriram Finance, AU Finance, HDFC. These all OEM agreement is already done and working properly. So he gets in-house finance immediately. And then comes to the insurance. So we have tie-up with the 4 insurance companies. We give them the insurance. And then we have a tie-up with the HPCL and IOCL. Today our team, CEO and Sarthak is already there with IOCL for a big agreement with them on discount. So within, then they get the fuel also, the discount also on fuel, because a single operator, they don't get discount. But through us, our volume will be highest one day. So they are getting better discount if they buy the fuel through us. So similarly, in case of FASTag also. So in future, we may add lot of value creation. And then ultimately, he can sell the trucks from this platform also. It's a whole ecosystem to create the job opportunity to become an entrepreneur for the single operator or for the driver we are creating. So in terms of road transportation, we are helping them to reduce the logistic cost, which is the ड्रीम प्रोजेक्ट फॉर आवर नितिन गडकरी जी की 14% से इसको लेकर के 8% तक लेके आनी है। वो काम ट्रकसप बहुत बखूबी से करने जा रहा है और ऑलरेडी कर रहा है। सो दिस इज द होल अबाउट द ट्रकसप। Now I would request whatever question you have, first we'll start with Ritco and later on we can start with the TruckSup. Thank you. Thank you everybody. Thank you very much. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and 1 on their touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and 2. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. The first question is from the line of Ishant Lalwani from Ashika Institutional Equities. Please go ahead. Hi sir, congratulations on a good set of numbers. So could you break down the current revenue mix by segment? For example, how much revenue coming from contract logistics, FTL business, etc.? Very good question, sir. Sir, 90% business is come from our B2B business of transportation, and remaining 10% business come from all value-added services, which is, I forgot to add one value, that is multimodal. We have become a business associate for Concall also. So to reply your question, that 10% come from warehousing, in-plant logistics, and distribution and multimodal. These all services we have started, very recently, last 1 year or so. So their number will increase. Warehousing and in-plant logistics, it's not a number game, it's a profitable game. So in terms of volume, it may not affect much, but it will help to increase our bottom line. But yes, our multimodal business, we have a target that within 3 years, this will have 30% growth, 30% volume of our business in future.
Also, can you share the EBITDA margin from each segment? From both? Honestly speaking, I may not have, but if you talk about the operating margin, generally we work for B2B business from and all value addition services from 10 to 14%, but the warehousing and in-plant logistic business works on 20%. So that is why I'm saying that in-plant logistic is not only a warehousing, but there are a lot of value-added services. That is why their margin value is more. So this is how it works. So overall, our EBITDA margin is 8.1% because the volume is not very significant. So it may not reflect immediately, but in coming 1 to 3 years, it will have a huge impact on our balance sheet. So also, how do you see the overall mix percentage evolve in the next 5 years? And which segment is likely to become the largest revenue contributor in upcoming 5 years? Sir, the way the road building is happening all over India and the way infrastructure, this government stability till 2029, we are very sure that infrastructure will be the key focus for Ritco, and that is why we are spreading our wings in a big way in steel and cement industry. Today we work with Jindal, all groups, Tata, and downstream of steel and inward movement, outward movement, all mining projects, everything which is related to the infra. So we believe that our road transportation will still dominate, but now customers is asking us to give a better solution other than the road also. So that is why we are focusing more on multi-modal nowadays, creating a team. People are coming even from Concall also, and big railway companies, even the retired, railway people are also joining us. So we have a target that, as I mentioned earlier, that within 3 years, this will be not at least it should be 30% of our total volume from multimodal. As far as profitability is concerned, profitability from the warehousing and in-plant logistic will be much bigger. Okay. And regarding your trucker business, could you first explain how it differs from I would suggest that we decided that first we'll go for the Ritco, but since you have asked for trucks, no issue. I'll continue. No, please carry on. Let's finish this first. आप कुछ पूछ रहे थे? Yeah. So regarding the trucker business, could you explain how it differs from platforms like Porter? Also, बोलिए. Yeah. Also, how will you monetize the trucker business? Okay. So ये कई लोगों का सवाल होगा, तो आपने पूछ लिया तो मैं बताता हूँ. देखिए, पोर्टर का क्या मेन फोकस बिजनेस है within the city. So they deal with the 2 ton, 3 ton, and 4 ton, and they take the responsibility of money also and working capital also they have to put. So we are totally different from there. We are not responsible. We are not taking money directly for the freight. It means that we are on the subscription basis and value-added services. So our business works like say intra-city. जितने भी ये अंतरराष्ट्रीय यानी कि पूरे हिंदुस्तान में जो ट्रक घूम रहे हैं, इनका जो B2B business है, which is 95% of the business. So we serve to them rather than within the city. So we have no plan to go within the city business. Number one, our main focus is to reduce the this empty running and the idle cost for the trucker, so that he earn more and still reduce the price, and the consignor or consignee will be benefited. So in this process, we take the subscription, which is 300, 600, 900, 3,000 and 14,000, depending upon the what subscription he has taken. We have a lot of value-added services there. So it is already started. Monetization has already happened. In fact, first quarter we have done a business of almost 1.75 crore. In this quarter, we will be crossing 3 crore rupees. So in this year itself, we have a target of crossing 15 crore rupee business, which is a fantastic job for a company like us who has very recently started. Number one. And number two, for value-added services also, the revenue has already started. How it comes? That we set up our discount with Indian Oil and HPCL, and then we pass the part of the discount to the single operator depending on his consumption. So the time is not very far. I can see that we will be the largest consumer of fuel oil without owning any fleet. We will be the largest consumer of insurance policy without owning any fleet.
So this is how it will work. So where services work like this, that we'll get a volume discount and part of the discount will be passed. So it will be a win-win situation for both of us, the vehicle owner also, for us also, and the load provider also, because ultimately he's getting the truck within 2 hours. That is our target, that within 120 minutes we provide him a truck, and today it takes for him for 1 to 3 days to get the truck. So this is how it works. And how many number of active users daily? I would request our CEO to reply this question because it's more technical. Virender ji, can you please explain how many users we have daily and concurrent users? These are few technical things which you can tell better. Yes, sir. Yes, sir. Hi, Kanji. You are asking about the number of concurrent users who are visiting our platform, who are coming for the loads or looking for the loads, right? Right. So on average basis, we have near about 7.5 to 8.5 number of loads. People are putting the loads, and near about 3 to 7.5 to 8.5 thousand. Sorry. Yes, sorry. Thousands loads are coming, and near about 18,000 to 19,000 numbers of users are visiting the platform for the loads. That is on daily basis. That is on a daily basis. Yeah. Also, what percentage of annual expense that is currently allocated to this trucker business? Okay, so this thing is with me, so I would like to add because CFO was to join also, but he is down with the dengue, so he has given me some figure. So your question, though you have many questions which may solve the purpose of many people, but other must have also asked few questions. So I would give this reply. So we have, as of now, you are talking about Trucksa. Our expense is almost 1.7 to 2.2 crore, depending upon in which month we are doing which branding and all that. We have not taken any celebrity. We have signed 50 YouTuber with us at very low price, and they are doing digital, social media promotion for us. On one video you can find on Trucksa, they have more than 10 million or 5 million views. So this is how we are spreading, and penetration is happening in every corner of India. Okay. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. The next question is from the line of Man from Growth Sphere Ventures. Please go ahead. Hi, sir. Thank you for the opportunity and congrats for the great set of numbers. Sir, the first question that I've had is that why should a trucker download your app over say Blackbuck's app or over say Will's app? So what is the differentiation that Trucksa brings to the industry? Sir, thank you for asking this question and thank you for acknowledging our hard work. देखिए अभी क्या है कि ब्लैकबक का जो पेनिट्रेशन है, पहली बात तो अगर वो हर सर्विसेज को इंक्लूड किया, इफ यू इंक्लूड एवरी सर्विसेज, हिज पेनिट्रेशन इज अप टू 12 to 15%, though but they claim it is more than 20%. Number one. Number two, Visa is focusing only on GPS. They are not on all these value-added related services and freight solution. And third is that one has to understand this point that we have a Ritco on the background and we have the rapport of dealing with this single operator for last 30 years. So this business runs on the trust basis. Now we have the penetration, our goodwill, our rapport, our team in the every corner of India, and somehow they are related with Ritco for some work, maybe for load basis or some other services. So their trust level on us is more than any other company, number one. Number two is that if you go practically and see our app is focused in giving solution to the vehicle owner. In my earlier conversation also I said we are giving solution to vehicle owner. Whereas both the company which you have mentioned in their particular way, they are serving to the consignor and consignee. And the same thing, earlier I told everybody that we don't want the repetition of Ritco logistics that we are going to the customer. We are giving solution that wherever the vehicle is getting unloaded, we are giving them the load. So that is why people are coming to us in numbers and putting their loads.
and vehicle owner is getting the loads immediately where they are getting unloaded. So their empty running is getting reduced. And of course, the Ritco has their own lot of loads. Where lot of, we started in that way only. So the trust building is there and our value-added services. We are the only company as compared to Wheelseye and Blackbird, since you have taken the name. The whole ecosystem is created by only one company, that is Structure, which I have mentioned in my earlier call also, that from buying the vehicle to insurance to finance to FASTag to GPS to providing load and then again selling the vehicle, this is created by only Ritco and Structure. And the bigger thing which we are going to introduce in next 2 months, the driver portal. If you ask any vehicle owner, what is your biggest problem? He'll say load availability at time and the driver availability. So we are creating a driver portal in association with M-Parivan, where verified drivers will be available on this platform. So trying to ease the work situation, ease the business for the single operator. So this is our USP. Interesting, sir. No, understood it very well. Sir, now I wanted to ask the question on your load business marketplace, right? So there are companies in China like FTA which are specifically making the whole business out of their load business. So what I wanted to understand is that for us, whether the right to win can be that we already have the supply of the truck operators to our own full truck model and multi-model logistic model. So is that the reason that we can scale it up? Is that the reason that we can scale the load marketplace business model fast? सर मैंने आपको मैं थोड़ा इसका कैन आई स्पीक इन हिंदी बिकॉज ये क्वेश्चन कई लोगों या प्लीज सर बोलिए जी थैंक यू सर ऐसा होता है कि इस देश के अंदर जो फार्मर्स और ट्रकर्स ये दो लोग जो है ना ये इनसिक्योरिटी से भरे पड़े हैं क्योंकि इनके साथ हर एक पॉइंट पे चीटिंग हो रही है चीटिंग इस तरीके से हो रही है कि ब्रोकर भी चीटिंग कर रहा है रास्ते में पुलिस वाला भी चीटिंग कर रहा है उसका खुद का ड्राइवर भी चीटिंग कर रहा है और वो जो गाड़ी का मालिक है वो कंसाइनर और कंसाइनी के साथ भी चीटिंग कर रहा है ड्राइवर जो है डीजल निकाल के बेच रहा है पेट्रोल पंप वाला जो है ड्राइवर 200 लीटर डीजल लेने जाता है उसको 180 लीटर डीजल देता है और 20 लीटर के पैसे देता है होल इकोसिस्टम इज फिल्ड विद द चीटिंग नाउ व्हाट और इसमें ट्रस्ट एक बहुत बड़ा इशू है ऐसे ही किसानों के साथ भी यही प्रॉब्लम है कि वो जब माल बेचने जाते हैं खैर वो एक टॉपिक अलग है तो हम एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं वी आर टेलिंग दी लोड प्रोवाइडर एंड दी लोड यूजर विच इज द ट्रक ओनर एंड अवर बिजनेस सोसाइटी कि हम आपसे पैसा नहीं ले रहे हैं वी आर नॉट ए कंपनी लॉजिस्टिक कंपनी हु टेक्स दी मनी फ्रॉम यू and keep the cut with us and then passing the balance to the truck owner. Our USP is that you are talking to each other directly. It is something like a magic break, right? तो वो जो ट्रस्ट इशू लोगों के अंदर जब वो बिल्डअप हो रहा है तो उनको लगता है कि यार हम सामने वाले से डायरेक्ट बात करते हैं वेरीफाइड गाड़ी मिलती है और तरह तरह की सर्विसेज मिलती है पूरी ट्रैकिंग सर्विसेज मिलती है आज हम उस गाड़ी को एक ही ये सारी सर्विसेज अवेलेबल है लेकिन क्या आपको ट्रैकिंग लेनी है तो आपको कोई ट्रैकिंग सर्विसेज पे जाना पड़ता है आपको फ्यूल लेना है तो आपको इंडियन ऑयल में जाना पड़ता है लेकिन हमने जो इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया है वो उससे क्या है कि उनका ट्रस्ट बढ़ रहा है और डायरेक्ट जब वो आपस में बात कर रहे हैं क्योंकि बीच में बहुत बड़ा झोल होता है कई बार बीच में 3-3, 4-4, 5-5 एजेंसीज इन्वॉल्व है एक फ्रेट से जो फ्रेट एक्चुअली गाड़ी वाले को मिलता है तभी वो बेचारा मर रहा है तो इसको दूर करने के लिए हमने पहले दिन से डिसाइड किया था कि हम लोग फ्रेट खुद नहीं लेंगे क्योंकि जब आप फ्रेट खुद लेते हो तो आपको पैसे देने की भी फाइनेंशियल जिम्मेदारी आ जाती है देखिए एक होता है कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी विच वी डू वी हैव अ लीगल टीम टू सपोर्ट दैट लेकिन आता है कि फिर आपको वर्किंग कैपिटल में पैसा चाहिए तो जब आपकी वर्किंग कैपिटल में पैसा चाहिए ही नहीं लोग आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं लोड डालने वाले को गाड़ी 2 घंटे में मिल रही है या मिलनी शुरू हो गई है तो वो क्यों नहीं लोड डालेगा जबकि उसका काम सस्ते में हो रहा है तो इससे क्या है कि पूरा इकोसिस्टम काम करना शुरू हो रहा है उस तरफ बुरा मानिएगा सर कि कुछ लोग फ्रेट लेते हैं अपने पास और उसके बाद वो नंबर्स उनको बहुत अच्छे दिखते हैं वहां पे लेकिन अल्टीमेटली हमारा वो फोकस नहीं है हमारा फोकस है कि 85% जो गाड़ियां रोड पे चल रही हैं और भी जो गाड़ी वाले गाड़ी बनाना चाहते हैं वो खुशहाल हो और वो खुशहाल होंगे तो लॉजिस्टिक कॉस्ट नीचे आएगी और ट्रक्सअप का यूज और बढ़ेगा हमारा तो ये सपना है कि विदाउट ट्रक्सअप ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की कोई भी सोच नहीं होनी चाहिए एंड आवर नेक्स्ट लेवल विच आई एम शेयरिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म मुझे मालूम नहीं हो सकता हमारे कुछ कंपटीटर भी इसमें हो आई कांट से वी आर लेटर ऑन वी आर गोइंग टू अप्रोच दी बिग बिजनेस हाउसेस
कि we will not work as a logistic company, but we will be the catalytic to feed their demand, and all their transporters should be associated with trucks for getting the vehicles at the cheaper rate. So this is called enterprise sales, which we are working on that. उसकी टीम सब बन रही है और by next year we will start that. नहीं सर, थैंक यू सो मच ये समझाने के लिए। सर मेरे 2 लास्ट क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हम लोग ट्रक सबको कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन देखते हैं इन नेक्स्ट 2 to 3 years इन द टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या फिर रेवेन्यू में हम लोग उसको कैसे स्केल अप होता हुआ देखते हैं? देखिए हमारा जो क्योंकि हमारे सीईओ भी लाइन पे हैं और हमारा तो सुबह शाम क्योंकि बिजनेस के जो बाकी बड़े बड़े लोग हैं हमारी टीम के अंदर उनके साथ वर्टिकल वाइज बात होती है, कैटेगरी वाइज, यानी कि फ्यूल का या फास्टैग का या जीपीएस का या फिर लोड मोड का। सो आवर टारगेट दैट विद इन 2 years विल बी इन द ब्रेक इवन एंड देन वी हैव ए ग्रोथ रेट ऑफ जो हमारा पैट है which will move from 25 to 30, 50, 70, 105 crores. ऐसा हमारे बिजनेस प्लान में हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है और अभी तक जो भी बनाया हमने उसको अचीव कर रहे हैं सर। सो बाय विद इन 2 years दिस विल बी ऑन ब्रेक इवन और मे बी बिफोर। ओके एंड ब्रेक इवन सिंस आपने बोला तो हम लोग की इसमें फिक्स्ड कॉस्ट कितना लगेगा एंड कितना वेरिएबल कॉस्ट होएगा जो हम लोग को मंथली देना ही पड़ेगा वैसा? सर हमारा तो देखिए 70% के करीब खर्चा तो हमारा वो सैलरीज है, बाकी तो हमारा कोई इंफ्रा तो कुछ है ही नहीं, उसके अंदर एवरीथिंग इज वर्चुअल। बाकी जो 25 से 30% जो कॉस्ट है वो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है विच इज लिंक विद द बिजनेस विच इज कमिंग, लाइक वी हैव ए ग्रोथ पार्टनर सिस्टम, वी हैव पीपल ऑल ओवर इंडिया, बट इनिशियली वी हैव 300 पीपल, बट नाउ वी आर रिक्रूटिंग देम एज ए ग्रोथ गुरु. So we pay them very small amount and then they are converted into the growth partner, technically like a channel partner. And in next year we will be giving no fixed cost, but they will be on the business, on the performance basis. तो एक हमारा एक नेशन वाइड एक कैंपेन भी शुरू होने वाला है जिसके अंदर हम गांव के सारे जो 12वीं पास बच्चे हैं जो मोबाइल चला सकते हैं, जो कि आजकल सब चलाते हैं, हम तो उनको कह रहे हैं कि इस मिशन में जुड़ो और नौकरी छोड़ो। क्योंकि आज क्या है आपको बताता हूँ, मेट्रोस और सेमी मेट्रोस में जोमेटो, ब्लिंकिट की है और ओला उबर की अपॉर्चुनिटी है। टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 सिटीज है जहाँ पे ये अपॉर्चुनिटीज अभी आने वाले 10-15 सालों में नहीं दिखती क्योंकि उनका शॉपिंग ट्रेंड अलग टाइप है। तो ये लोग क्या करेंगे फिर, या तो शहरों में आएंगे, लेकिन हम कह रहे हैं आप मत रहो, आप अपने गाँव के आसपास रहो, 50-100 गाड़ियों के ग्रुप को मिलो और उनको बोलो कि भैया ये फ्यूल कार्ड है, इसको लो और इससे आपको भी डिस्काउंट मिलेगा, आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो हम ये पूरे देश के अंदर एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं कि हर आदमी एंटरप्रेन्योर बने। जैसे ना हर घर तिरंगा, मतलब हर गांव में ऐसे 4-5 लोग होने चाहिए जो अपने गांव की गाड़ियों को पुश करें इमोशनली, फाइनेंशियली, जैसे भी करके कि भैया आप हमारे थ्रू ये सर्विसेज लो। और सबसे बड़ी बात है कि जब वो सर्विसेज ले रहे हैं तो वो ऐप पे आ रहे हैं, तो हमारे लोड बोर्ड को फेमस कर रहे हैं। सो दिस इज द होल इकोसिस्टम वी आर ट्राइंग टू बिल्ड। नहीं सर, तो समझ गया सर। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर ग्रेट सेट ऑफ नंबर्स। मेरे और क्वेश्चन है बट दूसरे को भी होंगे तो मैं फिर से आता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. The next question is from the line of Vinay, an individual investor. Please go ahead. Yes, thank you for the opportunity and congratulations on a great set of numbers, sir. तो मेरे 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट सर, हमने काफी हायरिंग की है फॉर रेल एंड मल्टी मॉडल बिजनेस ट्रक्स अप के लिए भी, तो अगर आप थोड़ा इंसाइट दे सकते हैं कि न्यू हायर्स किस व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट एंड कितना ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बिजनेस को गोइंग अहेड। विनय जी नमस्ते, थैंक यू फॉर एक्नॉलेजिंग। देखिए कि हमारी सर्विस इंडस्ट्री में क्योंकि हम एसेट लाइट कंपनी है तो हमारा तो मनी इज रॉ मटेरियल एंड मैन आर मशीन। तो क्वालिटी मैन पावर अगर आप मुझसे पर कोई आज इस फोरम में पूछता है कि आपकी ग्रोथ की सबसे बड़ी अड़चन क्या है, कई लोग वैसे कई फोरम में पूछते हैं, तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, मैन पावर। तो रिटको के पास क्या है कि जो शुरू से ऐसा रहा है कि अगर हम हमारे लोग देखेंगे वो 15 साल, 20 साल, 25 साल पुराने हैं, क्योंकि वी क्रिएट वेल्थ फॉर देम एंड इट इज अ लिस्टेड कंपनी, सो वी प्रोवाइड ESOPs एंड ऑल दैट, सो वी कैन अट्रैक्ट द टैलेंट एंड वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग सिस्टम। सो कमिंग स्ट्रेट अवे टू योर क्वेश्चन नाउ, देखिए क्योंकि मल्टी मॉडल में हमारे को एक टेक्निकल सर्विसेज है जिसके लिए वी नीड ए पीपल फ्रॉम Concall, वी नीड ए पीपल फ्रॉम
Adani, we need a people from railway. So that is why massive hiring is happening, and most of these people are technical people. The sales guy will remain the Ritco जो हमारी already team है, क्योंकि वही लोग कस्टमर के पास जाएंगे, लेकिन पीछे का जो ऑपरेशन बिल्डअप हो रहा है वो इन्हीं लोगों से हो रहा है जो कि इस इंडस्ट्री से आ रहे हैं. नंबर 1. नंबर 2, आपने बोला ट्रक्सअप में, क्योंकि ट्रक्सअप अभी ग्रोइंग स्टेज पे है, तो नेक्स्ट 6 मंथ दे विल बी कंटिन्यू हायरिंग. 2 टाइप की हायरिंग हो रही है. ऑनेस्टली जैसे अभी ब्लैकबक का नेशनल हेड ही ज्वाइंड एज ए चीफ मार्केटिंग ऑफिसर इन आवर कंपनी 10 days बैक, विच इज अ बिग ब्रेक थ्रू फॉर अस. एंड सिमिलरली पेटीएम से बहुत सीनियर लोग हमारी मार्केटिंग में जुड़े हैं. चीफ ग्रोथ ऑफिसर ज्वाइन किए हैं एयरटेल से. तो ये कुछ सीनियर प्रोफाइल लोग ज्वाइन कर रहे हैं, और फिर एकदम जो नीचे लेवल के लोग ज्वाइन कर रहे हैं जो बीओ लेवल के हैं, जिनकी सैलरी 25,000 प्लस इंसेंटिव है. तो ये ट्रकअप में मैसिव हायरिंग इस तरीके से हो रही है टू पेनिट्रेट इन एवरी क्लस्टर वेयर ट्रक इज अवेलेबल. आप कौन सी जगह से हैं सर? आप कहाँ रहते हैं? मैं बॉम्बे में रहता हूँ सर. तो बॉम्बे में अगर आप रहते हैं तो आपको मालूम है कि भिवंडी थाने एरिया इज ए गॉड ऑफ ट्रकिंग बिजनेस. थाने इज गॉड ऑफ ट्रकिंग बिजनेस, और पतालगंगा और नागो थाने. सो दीज आर दी प्लेसेस, ये जो क्लस्टर्स हैं जहाँ पे हम अपनी पेनिट्रेशन बढ़ा रहे हैं. तो क्योंकि रिटको का हमारे को पूरा अनुभव है, हमें पता है कि डिमांड कहाँ है और सप्लाई कहाँ है, तो उसी बेसिस पे वो एक्सपीरियंस को यूज कर रहे हैं. अभी पतंजलि का जिसने कंप्लीट सप्लाई चेन बनाई है, मिस्टर मान सिंह, he is with us for last 1 year. He was right hand of Baba ji, Baba Ramdev, and his name is मान सिंह. हमारी ऐप पे भी दे सकते हैं. He is our COO. तो ये जो टैलेंट को लेके आए हैं, इसी बेसिस पे लेके आए हैं कि उनको हम पे ट्रस्ट है. रिटको की ग्रोथ उन्होंने देखी है, हमारी ई-सॉप्स फैसिलिटी उन्होंने देखी है, हमारा जो अपने एम्प्लॉइज को तो खैर हम बोलते नहीं, रिटकोशन बोलते हैं, उनके प्रति जो हमारा समर्पण है, जिस तरीके से हम उनको टेक केयर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सा मैं इमोशनल हो रहा हूँ इस क्वेश्चन पे. हमारे सीईओ है लाइन पे. He was with Manipal Group. He was the right hand of Mr. Pai. He is the person who has created Sahi Bandhu app for the gold loan. By leaving that stable job, and he has joined a startup like Truxer. तो कुछ कह सकते हैं वीरेंद्र, वो ऑरा भी है कि मैं लोगों को पटा के ले आता हूँ. This is it. नो सर, गुड डेवलपमेंट्स एंड मतलब काफी पॉजिटिव है फॉर अस. एंड सर एक और मेरा क्वेश्चन रहेगा, एक के अपना मार्केटिंग स्पेंड ट्रक्सअप के लिए कितना होगा ऑन अ मंथ ऑन मंथ बेसिस कि हम, बिकॉज अभी हम स्टार्टअप मोड पे है, तो मंथ ऑन मंथ मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग में अपना कितना स्पेंड होता होगा? देखिए, पहले जब हमने मार्केटिंग एजेंसी हायर की थी तो हम थोड़ा कैरिड अवे हो गए थे. पहले 2-3 महीने में दे वर टॉकिंग वेरी बिग एंड ऑल दैट, एंड ऋषभ पंत से हमारा ऑलमोस्ट फाइनल भी हो गया था. और लेकिन उसके बाद जब थोड़ी सी स्ट्रेटेजी चेंज की, पीपल हैव कम फ्रॉम एयरटेल, पेटीएम, ओला, उबर, उन्होंने आके हमें गाइड किया कि हमारे जो यूजर कौन है, और हमारा यूजर कौन है ट्रक वाला, हमारा यूजर कौन है बिजनेस एसोसिएट, इट मे बी एजेंट, इट मे बी फैसिलिटेटर और व्हाट, उन लोगों तक पहुंचा कैसे जाए. तो वो लोग जब इन बड़े कामयाब लोगों को देखते हैं ना, तो वो रिलेट नहीं कर पाते. ये ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है. तो हमें ऐसे लोगों के पास जाना चाहिए और वो माध्यम यूज करना चाहिए जो लोग इन लोगों के साथ जुड़ते हैं. तो हमने साहब ऐसे 50 यूट्यूबर साइन किए हैं. अगर आप मिस्टर राजेश को देखोगे, और वो अगर एक चिकन करी बनाता है और वो ट्रक्सअप की ऐप को साथ में रखता है, सिर्फ इनडायरेक्ट मार्केटिंग, तो उस पर 40 लाख व्यू आ जाते हैं. तो ऐसे लोगों को हमने पूरे इंडिया में हमने हायर कर लिया है. और हमारा जो अभी जो हमारा, क्योंकि हमारा डाउनलोड भी उसी से लिंक है, आजकल बहुत सारी ऐप अवेलेबल है कि यूट्यूब से कितना आया, गूगल से कितना आया, तो ऑलमोस्ट जो हमारे टोटल जो कॉस्ट है 2 CR की, उसमें से 25 to 30% हमारा ब्रांडिंग और ये डिजिटल प्रमोशन और जैसे मेडिकल कैंप लगा रहे हैं. क्या है ना, हमारे ट्रकर को कोई चीज डायरेक्टली बेचने जाओगे ना तो उसको डाउट की निगाह से वो देखता है. तो जब आप मेडिकल कैंप लगाते हैं जहाँ पे 500 ड्राइवर या ट्रक ऑनर बैठे हुए हैं और आप उनको समझा रहे हैं और इनडायरेक्ट मार्केटिंग कर रहे हैं, और आप उनको एक कैप दे रहे हैं, या हमारी एक स्कीम चलती है, हमारी ऐप खोलेंगे तो हर 1 महीने बाद, जैसे भी 15 अगस्त की चल रही है, कि आप अपनी फोटो खींचिए फैमिली के साथ और तिरंगे के साथ लगाइए, या मुंह को तिरंगे की तरह पेश कीजिए, तो बेस्ट वाले को 10 लोगों को टीवी मिलता है. तो हमारी ऑफिस हर जगह है, हमारा मीशो से टाई अप है, वहां पे टीवी पहुंच जाता है, फिर इसको ग्लोरीफाई करते हैं, ऐप में डालते हैं. तो हम ना ये निचले स्तर की छोटी छोटी चीजों से हम आगे ब्रांडिंग कर रहे हैं, कोई हम वो बड़ी चीज नहीं कर रहे हैं.
So this is how we are trying to do. ओके, और अगर एक नंबर मिल सकता है सर, एक अंदाजन महीने का कितना ना होगा 100 तो थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगा। किस चीज का सर नंबर सर? और मार्केटिंग स्पेंड्स जो अगर एक नंबर अगर आप बता सकते हैं फॉर ट्रक्स ऑफ स्पेसिफिक के लिए तो कितना आपका हो रहा है? एक्चुअली हाँ, तो बहुत बढ़िया तरीके से स्प्लिट किया हुआ करंटली नहीं है, लेकिन मैं अंदाजा बता देता हूँ क्योंकि हमने उसको डिजिटल मार्केटिंग और यूट्यूब मार्केटिंग को पूरा पार्ट में किया हुआ है, कॉल सेंटर मार्केटिंग एंड ऑल दैट। तो करीब समझ लीजिए कि 2 करोड़ का मैं जब 30% बोलता हूँ तो 50 से 60 लाख रुपए महीना हमारा उस पर खर्चा होता है, गूगल एड पे, यूट्यूब एड पे, इन इन्फ्लुएंसर के ऊपर। और कोई ऐसे इन्फ्लुएंसर नहीं है कि बहुत महंगे महंगे इन्फ्लुएंसर है, सिर्फ 2 इन्फ्लुएंसर है जिनके करोड़ों व्यूज आते हैं, वो जरूर थोड़े बहुत महंगे। और जो थोड़े बहुत महंगे क्या है कि वो समझ लीजिए 2-2.5 लाख रुपया एक पोस्ट के लेते हैं, बाकी सारे हमारे इन्फ्लुएंसर कोई 10,000, 20,000, 50,000 रुपया पर वीडियो वाला है। दिस इज हाउ वी आर ट्राइंग, वी डोंट वांट टू ओवर पुश दी थिंग्स। तो ग्रेजुअली वी आर क्रिएटिंग दैट इकोसिस्टम जिसमें हर गाड़ी वाला, हर टायर वाला, हर मिस्त्री इसके साथ जुड़े, और उसके लिए कुछ ना कुछ हम कर रहे हैं कि आप इससे जुड़िए, गाड़ी खरीद लीजिए, आप अपनी होली की, अपनी फैमिली की फोटो डाल दीजिए, समथिंग लाइक दैट वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट। Okay, sir. That answers my questions. So I'll get back in queue. Thank you again. Congratulations for good checking. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, in order to ensure that the Ladies and gentlemen, in order to ensure that the management is able to address questions from all the participants in the conference call, please limit your question to 2 per participant. The next question is from the line of Moksh Ranka from Arum Capital. Please go ahead. Hello, sir. Congratulations on a decent set of numbers. सर मुझे आपके कैपिटल एलोकेशन के बारे में जानना था। अभी हमने रिसेंटली प्रेफरेंशियल में आई थिंक थोड़ा पैसा रेज किया था, उसमें से 20 करोड़ हमने ट्रक शॉप में डाला था एंड बाकी का आई थिंक हमने अपने व्हीकल्स बढ़ाए। तो मुझे ये समझना था कि फ्यूचर में हम व्हीकल्स वगैरह हमारे बैलेंस शीट पे रखेंगे या मोर बिजनेस विल मतलब ट्रक शॉप के थ्रू एसेट लाइट वे में जाएंगे, तो वो मुझे समझना था। वर्कशॉप बहुत अच्छा सवाल है, और मुझे बड़ी आपका नाम इतना टेम्पटिंग लगा है ना कि मोक्ष आ गया है, जब आपके घर पे बोलते होंगे तो कितनी पॉजिटिव एनर्जी फैलाते होंगे आप। एनीवे, सो ऑन सीरियस नोट सर, हमने 100 करोड़ रुपीज रेज किया था। 20 करोड़ वॉज असाइन टू ट्रक्स अप, और उसको बड़ा ही प्रोफेशनली तरीके से किया। उसकी 1-1 करोड़ की 20 एफडीज बनाई गई और बैंक में रखी गई। वो हर महीने 1 करोड़ और 50 लाख के ब्रेकअप में वो हर महीने अपना एक एफडी को लेते हैं। तभी आप देखेंगे हमारी बैलेंस शीट में वो जो अदर इनकम ट्रक्सअप में वो हमारी एफडी की होती है। 80 करोड़ रुपीज जो रिटको में आया, दैट इज नॉट एट ऑल फॉर बाइंग दी ट्रक। फॉर बाइंग दी ट्रक वी डोंट नीड मनी, वी गेट 100% फाइनेंसिंग एंड वी आर, हमारे पास 200-300 के करीब गाड़ियां हैं और हम उतनी ही गाड़ियां रखते हैं। और ये भी गाड़ियां हम इसलिए खरीदते हैं बिकॉज बहुत सारे टेंडर की ये क्लॉज है गवर्नमेंट की कि थोड़े बहुत इतनी गाड़ियां होनी चाहिए, बिकॉज वी पार्टिसिपेट इन लार्ज टेंडर। तो उसकी कुछ क्लॉजेज हैं, कुछ हमने ही मिलके गवर्नमेंट के साथ डलवाई हुई है ताकि हर कोई मतलब छोटा ऑपरेटर ना आए। और कुछ हमारी ड्राइवर ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, जनरली रिस्क मैनेजमेंट होता है। तो अपनी गाड़ियों की कभी फ्रेट ऊपर नीचे हो जाता है पर्टिकुलर एरिया में, हमें अपनी गाड़ियां बेच के फ्रेट कंट्रोल करना पड़ता है। तो हमने कोई 1 रुपया भी उस 80 करोड़ में से अपनी गाड़ियों में नहीं लगाया है और ना ही हम कभी फ्यूचर में लगाएंगे। इट इज ऑल इन्वेस्टेड। उसमें से कुछ पैसा मेरी मतलब करीब 3.5-4 करोड़ रुपया इन्वेस्ट हुआ है टेक्नोलॉजी में, क्योंकि वी हैव कम अप विद दी वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर फॉर रिटको लॉजिस्टिक्स। और बाकी सारा पैसा हमने वर्किंग कैपिटल और अपने ये जो वेयर हाउस की जो लीज रेंटल है हमारे, उसके जो 2 महीने या 3 महीने के किराए देने होते हैं, एडवांस देना होता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये सब पैसा हम उसमें यूज कर रहे हैं। कोई एसेट के अंदर हमारा कोई ना अभी किया है और ना ही फ्यूचर में कोई प्लान है। और कभी ऐसी सिचुएशन आएगी कि हमें गाड़ियां खुद लेनी पड़ेगी तो वी हैव ट्रक्स अप सर, वहाँ बटन दबाते हैं, हमें बहुत सारे वहाँ गाड़ियां मिलती हैं। तो बाइंग व्हीकल इज नो सेंस फॉर अस। ओके, तो मुझे जानना था फ्यूचर में हमारा 300-350 जो कि हमारे टेंडर प्रोसेस के लिए जरूरी है। कुछ कस्टमाइज व्हीकल भी होते हैं, जैसे किसी से हमारे को बहुत बड़ा काम मिला, रोज के 100 ट्रक्स लगने हैं, तो ही सेइंग कि 4 ट्रक को कस्टमाइज कर दो, वो विद इन प्लांट चलेंगे।
तो उसके लिए वो बाहर नहीं जाना चाहता और हम उसको बाहर भेजने भी नहीं जाना चाहते, तो उसके लिए हम कस्टमाइज व्हीकल बना लेते हैं. दिस वर्क लाइक दिस. ओके, तो मुझे ये जानना था, हमारा फ्यूचर में मेजरली कैपिटल कहाँ लगने वाला है, रिटको में और ट्रकशॉप में भी. मतलब ट्रकशॉप में तो आपने बता दिया मार्केटिंग में ज़्यादा लगने वाला है. रिटको में मुझे जानना था अगले 2-3 साल में हम पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो वो मुझे समझना था. सर रिटको में तो देखिए इट्स अ नॉन एसेट बेस्ड कंपनी लाइक ट्रकशॉप, और हम लोगों को जो पैसा, देखिए हमारे सारे ब्लू चिप कस्टमर हैं. हम 40% काम गवर्नमेंट कंपनीज का नवरत्न के साथ करते हैं, जितनी भी देश की 10-12 नवरत्न कंपनी, बाकी सारा काम हम ये सब रिलायंस और ये सब एमएलसी आपके जैसे आईटीसी या नेस्ले जैसी कंपनी से करते हैं. तो हमारा जो पैसा लगता है वो वर्किंग कैपिटल के लिए ही लगता है और थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए लगता है, और हमारे इंटरनल सोर्सेज हैं. तो 2 साल के बाद कभी जरूरत पड़ेगी तो हमारे साथ तो कंटिन्यू बैंक की सपोर्ट है. सो वी डोंट सी एनी प्रॉब्लम इन फ्यूचर फंडिंग और समथिंग लाइक दैट. ट्रकशॉप इज आवर टोटल फोकस, जहाँ पे हमें फंड रेज करना है, और वो लोग हम इस मार्च साइड में फंड रेज करेंगे. अभी नहीं कर रहे हैं, अभी जरूरत नहीं है. वी हैव मनी टिल जनवरी फेब, जो कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा 20 CR था उसकी हमने पूरी एफडीज करा के रखी हुई है. उसको हर महीने जितना उसमें कमाई होती है उसमें से माइनस करके एक कमेटी बनी हुई है, हम उसको यूज कर लेते हैं. क्या है ना सर, एक बात बताता हूँ आप लोगों को. आजकल क्या है, सबको ना एक जोश है. मेरे सीईओ भी लाइन पे हैं, वो कह रहा हमारे इस सोच से ढल चुके हैं कि स्टार्टअप है तो लेट्स बर्न दी मनी. द मोर यू बर्न दी मनी द मोर बिकम फेमस. लेकिन क्या है ना, हमने अपने खून पसीने से कंपनी रिटको लॉजिस्टिक तैयार करी है, तो हमें चाह के भी ना हमसे वो खर्चा होता नहीं. हालांकि हमारे कई कंसल्टेंट बोलते हैं स्पेंड मनी ऑन एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग ये वो, लेकिन क्या है कि वाइजली पैसा खर्च करने से ही प्रोडक्टिविटी है. ऐसा पैसा खराब करने से उसका आउटपुट नहीं निकलती है, हमारा ये सोचना है. तो हम वो बैलेंस थिन लाइन को मेंटेन करके चलते हैं. ओके सर, बहुत ही मैं आपका ऐप भी यूज़ करता हूँ, हालांकि मेरे पास कोई ट्रक नहीं है, बट एज एन इन्वेस्टर मैंने सोचा कि आपका ट्रक ऐप डाउनलोड करके देखूँ. मैं काफ़ी टाइम से यूज़ भी कर रहा हूँ एंड काफ़ी फ्लूगल वे में बनाया गया है. मतलब आई थिंक आपने ज़्यादा पैसा बर्न नहीं किया, तो वेरी मतलब गुड ओपिनियन अबाउट दैट. और थैंक यू सर, थैंक यू. एक चीज आपको आई थिंक देखी होगी कि एवरीथिंग यू डू इन आवर ऐप दैट इज मोर ऑन पिक्टोरियल बेसिस, बिकॉज आवर यूजर इज नॉट लाइक यूजर ऑफ जोमेटो और ऑल दिस थिंग. तो हर चीज 2 स्टेप पे होती है, और जिनको लिखना नहीं आता है वो बोल के भी कर सकते हैं. तो इस तरीके से ऐप बनाया हुआ है. अगर आपका ट्रक होता है या आप उस पर कोई नंबर डाल के काम करते तो आपको और आसानी होती उसको समझने में. तो फोकस इज दैट. यू विल नॉट फाइंड बेफजूल की कोई स्कूटर उड़ता हुआ आ रहा है झंडा लेकर के, कोई वहां से कोई एडवर्टाइजमेंट के लिए एक टायर उड़ता हुआ आ रहा है. इट इज वेरी सिंपल कि जब ट्रक ऑनर सिंगल ऑपरेटर इवन वो खाना बना रहा है गाड़ी चला रहा है ऐप पे आया, उसका फोकस सिर्फ यही है कि मुझे लोड ढूंढना है, तो वो सामने दिखना चाहिए, उसको अंदर नहीं जाना है. तो सोच इस तरीके से रखी गई है, क्योंकि हम उस दौर से गुजर चुके हैं जब हमारे पास 2 गाड़ियां थी. तो हम मतलब वो पेन हमें मालूम है और हमें उनकी लेवल और उनकी सोच भी मालूम है, तो इसीलिए उस ऐप को इस तरीके से बनाया गया. ओके एंड मेरा लास्ट क्वेश्चन था, मेरा मोस्ट क्वेश्चन था अभी लास्ट. Okay, I'll get back in the queue. Yes, sir. Thank you, sir. Yeah. The next question is from the line of Heta from Monarch AIF. Please go ahead. Yeah. Hi, sir. Am I audible? हाँ जी बोलिए. So firstly, congratulations on amazing set of numbers. I just had 2 questions. Firstly, on the Ritco Logistics, core business, I understand you're, adding new sectors, and I believe the first participant you did mention that you plan to sustain the margins at 8%. Now considering that we are entering new sectors and, we are also planning to expand the multimodal business. So what is the outlook on margins? Like, do we estimate the margins to go, 100 or 200 bits higher? And does this diversification help with reducing the working capital days, say compared to FY25? मैम आपके मल्टीपल क्वेश्चन है, मैं उसको एक एक करके जवाब देता हूँ.
See, Okay. as I mentioned earlier also that in-plant logistic and warehouse will add lot of in bottom line, but their volume is not, it's not a business which you can go and immediately get. It takes, working and hardship of, straight work of lot of months to get that business. So definitely coming 1 to 3 years, this will affect positively on our margins. Number one, as far as warehouse and in-plant logistic is concerned. I cannot disclose the name. We are in a process of getting few very big business. In fact, Sarthak is in the line. He also sees the warehouse business of Ritco. And number one. Number two, multimodal business gives us the, value addition services, which help us to keep the customer with us and take a bigger volume. In a way that today for relay services is going to he's going to Adani and or Concall, or not directly to the Concall, say DP World, and for road transportation he is with the Ritco or any other company. Today we are telling them ki, you forget about going to the multiple people. We will give you the services. We'll give the one rate. Either we take it through the road model or road or rail. So that gives a comfort to the customer, especially in case of these rainy seasons, where natural calamities, where our capacity to move the material through rail, which reduces the pressure on the road also. So I'm not sure, I will not over comment that it will have a immediately effect on bottom line, but obviously in coming 1 to 3 years, this will affect our bottom line in a positive way. So would it be possible to quantify it by what percentage or by what basis points it could improve? Any possible guidance? मेरे को लगता नहीं इस प्लेटफॉर्म पे अभी इतना बड़ा कमिटमेंट देना रहेगा. फिर भी I mean you can send us the mail. मुझे मालूम नहीं है कि हम लोग बोल सकते हैं ये बात, नहीं बोल सकते, हमें अलाउ है ये बोलना नहीं बोलना, because we are doing it first time in our life. So we can have that data, and if it is allowed, then we can share it with you. What is our business plan in regard to that? Okay, and also on the working capital days, if you could sorry, I on that. See, we have reduced the working capital in last 4 years. If you see from 125 days to now, I think it is. I will ask Manmohanji. I think it is 103 days. Manmohanji, what is the 109 days. Now it is 109 days, and this year our target is 103 days. And we are developing a software which we have already started working. Rather, it is now almost on the finishing stage, where we are API integration is happening with many customers who are open to to help us to give the online POD, because their auditor has to accept and all that. So वो पूरा उनको समझाने का process हमने चालू कर दिया है, and hopefully कि हमारा आने वाले दिनों में this will come down. It has to come down and it will come down. We are working on that. In fact, अभी 5 दिन से तो नीचे लेके आए ही हैं इस साल. Our target is to bring it down to 95-100 days in coming 1-2 years. We are working very hard on it. We are doing different things to bring it down. Our target is to bring it down to 90 days in coming. Probably it may, because we are growing also very fast. So probably we are trying to maintain it. And our target is 90 days in coming 2-3 years. Sure, sir. That's very positive to know, sir. And just one confirmation on the truck stop business. Ma'am, may we request that you return to the question queue? Sure. Thank you, ma'am. Ladies and gentlemen, due to interest of time, that was the last question for today. I now hand the conference over to Mr. Sahil Sanghvi from Monarch Networth Capital Limited for closing comments. Just want to thank the management, especially Sanjeev sir and the whole team, for patiently and elaborately answering all the questions, and also would like to thank all the participants for joining the call. Thank you, and that concludes the call. Thank you, sir.
On Thank you behalf very much. of on behalf of Monarch Network Capital Limited, that concludes this conference call. Thank you for joining us, and you may now disconnect your lines. If you found this video helpful, please like, share and subscribe to Concall India for latest upcoming Concall.